Keep on writing them, okay, guys. Then this is how amplitudes add up. Okay, they add up in a vector sense. So A is the amplitude of first, B is the amplitude of second, and R is the amplitude of resultant. Okay. Now write intensity is proportional to amplitude square. Intensity is proportional to amplitude square. So therefore, you can see that I1 is equal to A square because A was the amplitude, amplitude square is intensity I1. B square is equal to I2. Okay. So this is A square is I1, B square is I2. So A is root I1. Okay. And B is root I2. And therefore, this formula, resonant amplitude formula, becomes this formula. Okay, you square both sides. First, you square both sides. You get R square is equal to A square plus B square plus 2AB cos phi. And then R square is what? Resultant intensity. So I resultant intensity is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. Amit, are you? Is it okay? Are you getting this? Already we discussed, no? Last class. Sir, that wasn't really explained. Okay. So now is it clear why intensity formula is this? On the left side, you write in the subscript resultant. I जो left side है, left side. I का formula लिखा ना. Left side में I है. Left side में I है, just I, because R square is I, okay. And that is resultant intensity, I res. I with the subscript of RES. Yes, I resultant is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. Okay. This is your basic formula. This is the formula which you should always remember. So write it 3 times. Okay. Because from this formula, all the things which are there in your asked in your exam are derived. I resultant is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. Always keep in mind this is intensity. इसमें I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 होता है. और amplitude में it is A square plus B square A1 square plus A2 square plus 2 A1 A2. ठीक है? Okay. Now there are some results. So ये जितने भी है ना, जितना ये लिखा हुआ है ना, इसके बाद जो लिखा हुआ है, ये सारे के सारे results हैं from this yellow formula. Okay. तो देखते हैं एक एक करके what are the results. ये सारे के सारे results हैं. ठीक है? पहला result है if I1 is equal to I2 is equal to I0, मतलब both the sources are of same intensity. देखो, the both the sources are, लिख लेना, तो क्वेश्चन में लिखा होगा both the sources are same intensity, ऐसा नहीं लिखा होगा कि I1 equal to I2 equal to I0. ठीक है? So if both the sources are same intensity, then you can understand why this is true. This is the result. क्या होगा? आप I1 और I2 दोनों का I0 डालोगे, तो I1 I2 मिलके 2 I0 होगा. फिर यहाँ पे I1 I2 दोनों I0 डालोगे तो I0 स्क्वायर का रूट आएगा, फिर 2 I0 आएगा, and you will get this line. I hope it is clear. This line is clear. I1 plus I2, I0 plus I0 plus 2 I0 cos phi. Okay. Is it okay, everyone? And then what you do is you take 2 I0 common. No, this is 2 I0 plus 2 I0 cos phi. When you write 2 I0 common, you get 1 plus cos phi inside, and 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. So it will become 2 cos square phi by 2, and that 2 will multiply outside, you will get 4 I0 cos square phi by 2. Okay. Is everyone understood? Has everyone understood? Cool. ठीक. अब देखो, suppose there are 2 light sources. This is the second result. This was the first result. The second result is this. When cos phi is 1, basically when it is maxima. When maxima, cos phi is 0, cos phi is 1. ये क्या होगा? I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 हो जाएगा, cos phi 1 होगा. And this can be written as root of I1 plus root of I2 the whole square. This is important. Okay. I max is root I1 plus root I2 the whole square. By the way, see the first result. Tell me, before I0 cos square phi by 2, what is the minimum value of cos square?
Yeah. Minimum value of cos square. And freely choose your phi. You're free to choose your phi. Tell me what is minimum value of cos square. This is the minus one. This cos square. So one. Minimum value. किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी का मिनिमम क्या होता है? Zero. Yes, the minimum is zero. So write the minimum intensity is zero. Zero into 4I0. I minimum is 0 into 4I0. And I maximum is the cost of maximum कितना होता है? 1. So it is 4I0. I max is 4I0. ठीक है? The important though results. These are two important things you need to know. Okay? It is 4I0. Fine, everyone. Next है ये जब दोनों सोर्स इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं ना तो then the maximum is 4I0 and minimum is 0. So this is the beauty of wave optics. If you shine two torches, one torch is of I0, another torch also of I0 at the same spot on the wall. In general, you would expect that the intensity at that point will be 2I0. It's twice. But then in wave optics, what happens? The waves can constructively or destructively interfere and can give you anything from 0 to 4 times I0. Okay, understood? We will see how understand वो सब कैसे होता है बाद में. अभी कुछ फॉर्मूले करके we'll today do some problems. अब लिखो when cos phi is -1 इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला था ना आज जो येलो में लिखा है अब cos phi -1 होगा तो it will be I1 plus I2 minus 2 root I1 I2. लिखो when cos phi is -1. Yeah, going to the mall. Everyone. Okay. I1. Okay. Now write I minimum. Your root. It is the root of I1 minus root I2 the whole square. Now there is something called I max by I min. So what is I max by I min? I think this is resolution. Yes. Okay. I just write I max by I min is this. I max by I min is this. Okay. Okay. And this we already wrote. If I1 is equal to I2 or I0, then I max is 4I0 and I min is 0. Already wrote it. Okay. Now this is important. If the sources are incoherent. Incoherent means wave optics is not acting. Okay, without this chapter. Then it's simple. It is I1 plus I2. Okay. This two sources are incoherent. They do not. There is no interference, and therefore I resultant is just sum. Okay, magnitudes of sum. Okay. We will do problems based on this concept. Okay. Yeah. 26th. 26th.
The intensity ratio of the maximum and minima in interference pattern produced by two coherent sources of light is 9:1. That means which ratio they are given? I max by I min is 9:1. The intensity of the light used in the ratio are in the ratio what, right? Because huh? I don't know. We do it again. Okay, right? 9/1 I max by I min is equal to 9/1. Is equal to root of I1 plus root of I2 the whole square divided by root of I1 minus root of I2 the whole square. Okay, so इसमें आएगा root of I1 plus root of I2 the whole square divided by root of I1 minus root of I2 the whole square equal to 9/1 and you divide by I2 on both sides ऊपर नीचे numerator denominator it divide by root I2. Okay, divide करा था. So when you divide by root I2 you will get पहले वाले में ऊपर आएगा root of I1 by root of I2 minus 1 the whole square. Root of I1 by root of I2 minus 1 the whole, sorry ऊपर प्लस है कि माइनस है? प्लस है तो प्लस 1 the whole square और नीचे आएगा root of I1 minus root of I2, sorry root of I1 divided by root of I2 minus 1 the whole square. ठीक है, now let's say अब बोलो कि root of I1 by root of I2 जो पूरी चीज है that is x, so you'll get 9/1 is equal to, नीचे लिखो गंदा मत करो, 9/1 is equal to x plus 1 the whole square by x minus 1 the whole square. Okay, ठीक. Now you take square root both sides, you get x plus 1 by x minus 1 is equal to 3. Solve करके बताओ x का वैल्यू कितना है? एक मिनट, नहीं x का वैल्यू आया? No, I did it wrong. Other way, कोई और मेथड ना? No, हाँ, it is 4:1. Yeah. I just like square rooted on both sides. हाँ ठीक है. Then I found the ratio of the root I and root. ठीक. 8:4:1 है ना? आया? ठीक है. Okay. अच्छा, fringe visibility देखो क्या लिखो क्या होता है? Fringe visibility. What is fringe visibility? Fringe visibility is I max plus I min divided by I max minus I min. So be careful with the formula. It is again I max plus I min divided by I max minus I min. This is fringe. Now do it. Fringe visibility पूछ रहा है. The intensity ratio is beta. So I1 by I2 is beta. Intensity ratio है. I1 by I2, yes. I1 by I2 is beta. Send the working of this, okay? 26 also you send me everyone, okay? Vansh and Amit and Abhinav, 26.
Okay, I1 by I2 is beta. I1 is equal to beta I2. Okay, and then fill I max plus I max is beta I1, beta plus 1 the whole square by beta minus I max is, oh my god, I max by I max is by beta minus 1 the whole square. This is beta plus 1 the whole square. Beta minus 1 the whole square. Root beta minus 1. Beta plus 1 the whole square by root beta minus 1 the whole square. That is equal to I max by I max. F plus 1 by F minus 1. Okay. जो फॉर्मूला है वो विजिबिलिटी का which is I max plus I min by I max minus I min, right? इसमें तो I min डिवाइड कर सकते हो दोनों तरफ से, तो it becomes I max by I min plus 1 by I max minus 1. I max by I min तो मैं निकाला है, कितना निकाला है, निकाल देता हूँ. I max by I min निकाला. बीटा के टर्म्स में आंसर है. You got the A. तो फिर उल्टा होगा विजिबिलिटी. एक मिनट देख लेते हैं. ना उल्टा है, ये उल्टा है, मैंने गलत बोला था. विजिबिलिटी इज उल्टा. I max minus I min by I max plus I min. ये सारा समझ में आएगा. व्हाट इज दिस? ओके, जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना तो ठीक है. आई जस्ट वांट टू बी फास्ट इन मैथ्स. ओके, got it. I think A is the correct. ठीक है. Vansh and Amit and Abhinav send me your working. Okay, sir. 29. दूसरे से एम्पलीट्यूड डबल है ना, ऐसे दूसरा एम्पलीट्यूड स्क्वायर. सो एक का आई है तो दूसरे का कितना है, 4 आई. वेरी गुड. 29 करेंगे. एक सोर्स का आई है, दूसरे का 4 आई है. करो बेटा. Is it needed? Is it B? I don't know. One second. Okay, okay. I max is maximum with the resultant density when the intermediate field is 5. I max maximum है. तो I max is equal to root 1 plus root 4, which is 2 the whole square. So I max is actually 9. Yeah. IM is equal to 9 of I naught. No. So one individual I naught is IM by 9. इंडिविजुअल ये आई एम मैक्सिमम इंटेंसिटी, एक की इंटेंसिटी नहीं है. जैसे एक को तुमने लिया आई, दूसरे को लिया 4i, फिर बोल रहा है मैक्सिमम कितना है आई एम. तो आई और 4i का मैक्सिमम होता है, वो होता है 9i. 9 ना. आई और 4i का मैक्सिमम कितना होगा? आई और 4i का मैक्सिमम कितना होगा? रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 2 द होल स्क्वायर. हाँ ठीक है. रूट आई प्लस 2 root I the whole square कितना आएगा ये? 3 root I the whole square which is 9i. तो 9i is equal to IM. ये समझो पहले, लिखो.
9 I इज इक्वल टू IM, ठीक है। अगर 9 I इज इक्वल टू IM है तो the resultant intensity when they interfere at phase difference phi is given by, अब इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाओ, I resultant is equal to I1 which is I plus 4I plus 2I into 4I into cos square 5, फिर उसमें तुमको I की cos 5 सॉरी cos 5, so 5I plus 4I cos 5, इसमें से इसको लिखो 1 प्लस, नहीं पहले तो तुम I कॉमन निकालो तो आएगा 5 प्लस 4 cos 5, ये आएगा। और I को लिख दो क्या, IM by 9 है ना, समझ में आ रहा है, IM by 9, तो बाहर आ गया IM by 9 और अंदर आया 4 प्लस नहीं 5 प्लस 4 cos 5। अब सोचो अंदर ब्रैकेट वाला कौन सा है, 5 प्लस 4 cos 5, तो कन्वर्ट करो, 5 को तोड़ दो 1 प्लस 4 में, है ना, मुझे लग रहा है ऑप्शन सी है, जहां तक मेरा तेज दिमाग बोल रहा है। ऑप्शन ए सी, 4 times 1 plus cos 5, 1 plus cos 5 is 2 cos 5 theta by 2, 4 into 8 हो गया 1 plus 8, है ना, समझ में आ गया गाइस। अभिनव एंड वंश एंड अमित, अमित तेरा वीडियो क्यों ऑफ है? वेट सर, और वंश तुम्हारा वर्किंग किधर है, वंश और अमित? sir, I am not getting the answer. You have not written the answer or understood the answer? I have not understood how to do it. Like 26, कौन सा 26 की 29? 26. 26 अच्छा। अमित तुम ये कॉल ड्रॉप करो, मैं तुमको एक वीडियो भेजता हूं, देखना, ठीक है। लास्ट लेक्चर देखा था ठीक से? क्या? तो देखा था लास्ट लेक्चर, फिर तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इसमें I max by I min is 9:1 नो, तो आपने ये फॉर्मूला लगाया I, ये वाला, या इसमें इसको रूट I2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो आएगा रूट I1 by रूट I2 प्लस 1 द होल स्क्वायर, रूट I1 माइनस बाय रूट I2 माइनस 1 द होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। और फिर रूट I1 by रूट I2 की पूरी चीजें को टेक इट एट x, ओके, ठीक है। इसके बाद एक कुछ और कॉन्सेप्ट है, उनकी फॉर्मूला बताता हूँ। ओके, हाँ ये लो, ये 22 करो। तुमको पता है फेज डिफरेंस ऑफ पाई इज अ कंप्लीट वेव का, ये एक बार लिख के दिखा देता हूँ, मेक वन फुल वेव, साइन वेव बनाओ पूरी एक, बस एक बार, ठीक है। should only make for 1 lambda, okay, that horizontal distance the whole thing, so you make it like this now, this whole thing is called, in distance it is called lambda, wavelength it is called lambda, that this one full lambda, okay. In angle it is called 2 pi, in angle it is called 2 pi, same, ठीक है, that phi is the angle only, okay, तो phi है ना, तो phi लिख लो cos phi, अब 22 करो हो जाएगा। Phi is pi by 3, cos phi is 1 by 2, yes,
अच्छा, by the way, in YDAC it is understood that both are equal intensities. Both are equal intensities, so you can use directly the formula. back करके बताओ which formula you can use. 4 I naught cos square 5 by 2. Yes, you can directly use the maximum resultant intensity is 4 I naught cos square 5 by 2. What will be cos 5 by 2? We want 5 by 2 here. Yes, it is root 3 by 2. Then cos square of that will be, which is 3 by 4. तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है 4. उस पॉइंट पे अगर एक की I है तो वहां पे इंटेंसिटी कितनी है 4 I नॉट इंटू cos square 5 by 2. cos square 5 by 2 की वैल्यू 3 by 4 आ रही है. किसको किसको समझ में आ गया है कि cos square 5 by 2 3 by 4 आ रहा है? अभिनव को आ गया है. What about Vansh and Amit? Just a minute, sir. Three by four, right, sir? Yeah, cos square 5 by 2 is 3 by 4, no? Yeah, Are you getting it? What? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Amit समझ में आया क्या? Can you repeat it like once? What? Can you repeat it? Yeah, देखो यहाँ पे phi कितना है? Phi कितना है? 5 by 3. हाँ, और फॉर्मूला क्या है? When the both sources are equal intensity, the resultant intensity is 4 I naught square 5 by 2. 4 I naught cos square 5 by 2. So 5 by 2 का वैल्यू 5 by 6. Cos 5 by 6 is root 3 by 2. Square of that is root 3 by 4. Okay, got it. Yeah. So उसका आंसर आएगा. You will get the resultant intensity as 3 I naught, right? And पूछा है कि what is the expressed as a fraction of maximum intensity. Maximum intensity कितना था 4 I. आंसर कितना है? Intensity of this point expressed as a fraction of maximum intensity I naught. 3 by 4 का फाइनाइट होगा, right? पहले इंडिविजुअल को I लिया. इंडिविजुअल क्या लिया? I. तो उस पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी आया? 3 I आया. सही है ना? और मैक्स 4 है. तो फ्रैक्शन क्या है? इसने गलत किया. फ्रैक्शन बोल के फिर पूछ रहा है, फिर उसमें I नॉट भी लगाना. नहीं लगाना चाहिए. फ्रैक्शन पूछ के I नॉट नहीं लगाना चाहिए. ठीक है? ठीक. 23. लैम्डा मतलब कितना एंगल? 2 पाई. हाँ, यस. व्हाट इज द फेज डिफरेंस एट 2 पाई? और इन YDAC है ना, तो यू कैन यूज cos square 5 by 2. cos of कितना आएगा? पाई. cos of पाई आएगा ना. cos पाई कितना होता है? सब याद बोल रहे हैं. -1. cos पाई इज -1. उसका स्क्वायर कितना है? 1. सो इंटेंसिटी कितनी आएगी? 4 I naught, राइट? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर दोनों का लिखो जल्दी, I, I, दोनों सोर्सेज आ रहा है I and I, then the resultant intensity is 4 I naught, right? That means M is equal to, M की वैल्यू कितनी है? 4 I naught. M is 4 I naught, okay? And then पूछ रहा है intensity of light at a point where path difference is lambda by 3. lambda by 3 मतलब कितना एंगल? बिल्कुल सही. 5 is 2 pi by 3.
लिखो mu phi is 2 pi by 3, so pi by 2 is pi by 2 is how much? Pi by 3. So therefore resultant energy at that point is cos of 60. Cos 60 the square is 1 by 4, right? Are you following, Moksha? So resultant intensity is I naught 4 I naught into 1 by 4, which is I naught. पहले कितनी आ रही थी 4 I naught, अभी कितनी आ रही है I naught. So now the answer is m by 4. ठीक है, आज एम्पलीट्यूड का पहला फॉर्मूला लिखा था ना 18th करो उससे 18th क्या एम्पलीट्यूड वेक्टर्स के जैसा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ओके, पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है? दूसरे वाले का m5 is डाल दो फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1 into cos 3 pi. Ivan, what is cos 3 pi? Which is -1. Exemplar. It is 0 pi. Yeah, pi का करेगा तो 0 आएगा. करेक्ट, 0 आएगा. 0 आएगा. Okay, everyone. Yeah, 19th. Pi by 2 and pi. पांच प्लस 2 रूट आई 1 आई 2 होगा ना, तो 4 into cos 90 और 90 is 0. तो पहले वाले में 5 आई आ रही है ना, 5 आई आ रही है. दूसरे वाले पे आएगी आई आएगी ना, सिर्फ आई आएगी ना. 4 आई. ठीक है, 19 का आंसर 4 आई. इजी है ना. तो अच्छा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना है? 2n plus 1 लैम्डा by 2 या पाई by 2? सोच लो. पाई में कितना होगा? 2n plus 1 pi. Yes. तो इम्पोर्टेंट है ऐसे वर्ड्स में याद रखो. आई रिमेंबर इन वर्ड्स, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई और ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा by 2. ठीक है. I think guys, have you understood that 16th is B? Okay. Also, you can write 2n minus 1 also. Okay. Odd numbers you can also write by 2n minus 1. Okay. You can also write by 2n plus 3, 2n minus 3. Don't be surprised अगर कुछ ऐसा आ जाए. So 2n plus any number? No, 2n plus odd number. Okay. 2n plus odd number. Yeah. 15th. क्या? Part difference for constructive interference, no? Yeah, it is in lambda. N is what? Integer or natural number or what?
Huh? I was waiting for that. It is integer. It doesn't matter whether this is more or that is more. S1p minus S2p or S2p minus S1p. It can be plus lambda minus lambda plus 2 lambda plus 3 lambda. Okay, write it. And is integer always. It is not natural. Okay. It is integer always. Yeah, use this. Do this. 24th. You have to find S1p minus S2p. Yeah? Pardon? The value of theta is theta. So S1p minus S2p is how much? It is कितना होना चाहिए डिस्टेंस में 3/4 into I naught है ना at P it is 3/4 I naught. So what is the maximum intensity? 4 I naught. I naught is 4 I naught. तो मतलब उस पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी है 3 I naught है 3 I है. If the sources are I and I at P the intensity is 3 I. If it is 3 I, tell me what is 5. हाँ अब 6 पक्का. That is fast. ये समझ में आया कि P पे 3 आई है. हाँ अगर P पे 3 आई है तो 5 बताओ. Resultant में 3i. 3i is equal to 4i cos square pi by 2. हाँ pi by 3. वो cos phi है थीटा नहीं है. ठीक है cos phi है. cos phi मतलब क्या है फेज डिफरेंस इसको उतना. cos phi is कितना बोला pi by 3. एंगल में कितना होता है मतलब डिग्री में कितना होता है कितना 60 डिग्री होता है. ठीक इसका मतलब देखो 60 डिग्री यहाँ पे एंगल डिफरेंस है ना. तो लैम्डा में कितना डिफरेंस है पूरा एक होता है 360 वो होता है लैम्डा बाय लैम्डा बाय 6 हुआ ना. Trust issues are developing. Lambda by 6 हुआ ना. ये everyone has understood that. One second. Everyone has understood that इसमें ना the P पे जो phase difference है वो है pi by 3. ये समझ में आया? Because the resultant intensity is 3i. It is 3/4 of maximum. Online people have you understood this? Resultant intensity is 3i naught and therefore the phi is 60 degree. Because the phi is 60 degree, lambda wise it is lambda by 6. Now what you do is you say the एक कॉन्सेप्ट ये है इसमें आई थिंक इससे हो जाएगा ये कि 2 लैम्डा लिखो एक बार 2 लैम्डा cos थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा cos थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 6. और यहाँ से थीटा निकालो कितना आ रहा है cos थीटा आ रहा है क्या लैम्डा बाय 12 आ रहा है क्या 1/12 आ रहा है ना. ऐसे क्यों होता है बताता हूँ. एक बार देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन था ये.
24 था नहीं, 24 का आंसर ए होना चाहिए। ट्वेंटी फोर का आंसर ए है। हाँ देखो कैसा है, ये ऐसा है, इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ये यूज होता है कि जो S1P है और जो S2P है, तो these are the two path lengths. You have to measure what is the difference of these path lengths. That should be lambda by whatever, right? That should be lambda by 6, right? है ना? इन दोनों का path length का difference should be lambda by 6. तो approximation क्या है इसमें? ये जो P पॉइंट से PS2 जो लेंथ है ना, इसको घुमा के ऐसे कर दो, ठीक है? सेम लेंथ PS2, you make it like a compass and a pencil. The compass is at point P, the needle is point P, and the pencil at S2. And then you make a same arc like this. So this distance will be PS2, right? And remaining कितना होगा? PS1 minus PS2. और फिर then you say ये ऐसे एक, what I draw is I draw a triangle like this. This red line is perpendicular to PS1, okay? So इस triangle में the S1 S2 becomes the hypotenuse, and this distance, the difference is the base. So 2 lambda sine theta, 2 lambda cos theta, sorry, will be equal to that lambda by 6. That's why I written 2 lambda cos theta is lambda by 6. Understood? ठीक है? 2 lambda cos theta is lambda by 6. जोर से बोलो. This is not fully accurate approximation. ठीक है? Yeah. इसका हिंट है फुली एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ नहीं दे रखा है. अगर ये लेंथ और ये लेंथ दे रखेंगे ना, तो पाइथागोरस से करना पड़ेगा. Actually, you have to find PS2 and PS1. Okay, this problem is there in exemplar. You can try it. Okay. हाँ, अभी और कुछ करते हैं ये वाला. एक काम करो, ये वाले क्वेश्चन करो जिसमें कि अगर इफ दिस आर नॉट क्लियर, तुम वहां से देखो, बुक से देखो, और बुक से फोटो लेके ग्रुप पर डालो. बुक जल्दी करो. आगे आगे आगे, like more than 3/4, more than 75%. Yeah. Which chapter is this? अरे मतलब किस टॉपिक का है? Something with harmonics. Moment of ये वाला करना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो पिछले रोज का ठीक है. 3 4 5 They are sending photographs in the group to do that. Okay, 3 4 5. डाल दिया ना आपने?
two receivers R1 and R2 are at great particular distance from B. Two receivers are at great but equal distance. Which are the four? Four identical voltages the same way. Coherent. A B C D. अच्छा, A जो है वो लैम्डा बाई टू लेफ्ट में है, C लैम्डा बाई टू राइट में है और D लैम्डा बाई टू नीचे है B से ना, यही है ना? ठीक है, तो ट्राई करो. A B जो है A और B. Ooh, nice. I think I got it. Largest yes. This is just C. The hint is two sources which are at lambda by 2 from each other. They effectively cancel each other. But they are in line. For let's say ये R1 नीचे वाला है ना, ये वाला है ना. R1 के लिए कौन से दो सोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे? A and C नहीं. You can either say B and C cancel, or you can say A and B cancel. Yes or no? For R1, both of them नहीं cancel हो. कौन से? B produces in every side, but only one of them goes towards R1, right? No, not from both. Either only C or either only A. So let's say I cancel A, okay? Then for R1, A and B cancel, right? And only C and D remain, right? Yeah. सही है ना? अरे तुमको B और C कैंसिल करना है, B और C कैंसिल कर लो, एक पेयर कैंसिल होगा. क्या हुआ? ठीक है, चलो B और C कैंसिल कर दिया, ठीक, तुम्हारी बात मान ली. तो A और D बचा. A और D is the only source which are producing anything at R1, right? ठीक है. And for R2, similarly you can say B and D cancel. ठीक है. अब pardon, R2 के लिए तुम्हारे पास चॉइस नहीं है. B and D, only B and D cancel, right? And A and C don't cancel. Both are, हाँ बोलो. Yeah, that's what I was thinking. Then C is farther away, which is you are kind of correct, but there is more to this. R2 is more, no? Yes. R2 is more because, yeah. I think R2 is more. Answer देखो. This is I don't know. पता नहीं मुझे लगता है कि R2 is more. Can't explain. Gut feeling. तुम ये छोड़ो, तुम 4 करो. 4 easy. In question number 3, which of the two receivers picks up largest signal when signal B is turned off? Then ये तो गलत कर दिया इसने. B को टर्न ऑफ किया, अगर कैंसिल नहीं कर रहे हैं ना, A और C कैंसिल नहीं करेगी दूसरे को. What? अरे पता नहीं, सुनो तुम लोग ना, छोड़ो, ये बताओ मुझे, C टर्न ऑफ किया तो किसको, तो R1 पे कौन बचेगा? सिर्फ D.
और R2 पे कौन बचेगा, सिर्फ A, तो दे आर इक्वल। ये समझ में आया? ये लिख लो पहले, तो जो ऑब्वियस है वो तो लिख लो। इफ यू टर्न ऑफ C, then if you turn off C, then R1 and R2 receive equal signals. If you turn off A, same, they receive equal signals, क्योंकि अभी तुम A टर्न ऑफ किया तो R1 के लिए B और C कैंसिल कर रहे हैं और only D is the source, and for R2 B and D is cancelling, again only C is the source, right? So लिख लो, if we cancel only A or only C, R1 and R2 receive equal intensities. Are you understanding this Abhinav theorem? ठीक है, इसके बाद लिखो B का मुझे डाउट है, B बंद करोगे, मुझे डाउट है इसमें, पता है मैं क्यों बोल रहा था, सुनो मैंने क्यों पहले वाले का थर्ड का आंसर क्यों भी बोला था, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि वो जो बी और डी डिस्टेंस है ना λ/2 डिस्टेंस में, उसमें क्या होता है, इफेक्टिवली कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। अभी R1 पे सोचो कि R1 पे कौन कौन आ रहा है, तुमने बोला सिर्फ तुमने बी और सी कैंसिल किया, ठीक है, तो सिर्फ ए और डी आ रहा है, सही है, और R2 पे बी और डी कैंसिल करके सिर्फ ए और सी आ रहे हैं, ठीक। अब देखो ए और सी आर इन फेज, ठीक है, और एस और जो पाथ लेंथ है, अच्छा नहीं, इसका डेफिनेट आंसर है, इट्स वेरी इजी, देखो द पाथ लेंथ फ्रॉम R2 to A and R2 to C, आर दे इक्वल, दे आर इक्वल, राइट, और ए और सी फेज में भी है, so it'll add up, right, they'll add up, fine, so it will at R2 you will get a maximum, right, but for R1 if the sources are A and D only, right, then you're not sure, only in special cases it can be maximum, right, so if you have to take an option, it is R2 is more, understood, ठीक है, ये हो गया। एंड 5 का भी इजी है, देखो if you turn off D, then R1 has only one source remaining, right, but R2 will have 3 sources remaining, so R2 is more, okay, cool everyone, and these are questions, okay। अब देखो YDSC में होता क्या है, YDSC में बताऊं क्या तुमको, बता देता हूँ, नहीं YDSC नहीं बताऊँ, तुम वो लेके आओ, और बस दैट वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स जो बुक है, हम लोग इधर कर रहे थे ना, waves and thermodynamics, or you can also bring ray optics and wave optics, DC Pandey, you know where it is kept now.